Bismillahir Rahmanir Rahim, Chapter 29, Everyday Courtesies, Al-Adabul Yawmiya. ٹرانسلیشن سے پہلے ایک مرتبہ اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں. Yawning. If you yawn, do not do yawn loudly but quietly. Do not speak while yawning. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to put our hand over our mouth while yawning. Yawning is from Satan. Try to cover your mouth and stifle your yawn as much as you can. Sneezing. Sneezing is a blessing from Allah. You should not try to stifle a sneeze. There is no need to prevent it. When about to sneeze, you should turn your face away or cover your mouth and nose with your hand or handkerchief. This will soften the noise and will not irritate people around you. If you must blow your nose, do so quickly, turning your head to one side. Sneezing, a blessing from Allah. Therefore, you should say Alhamdulillah on sneezing. When a Muslim sneezes and praise Allah, those around him should reply by saying Yarhamukallah, saying Salam. Greeting Muslims by saying Assalamu alaikum is an act of kindness and courtesy. A Muslim should greet both the Muslims he knows and those whom he does not know. When you go out of your home or return, you must greet the members of your family by saying Assalamu alaikum. Remember that the nearest people to Allah are those who say Assalam first. Talking. Saying Assalamu alaikum should come before talking. You should always try to speak good. Either speak good or keep silent. If you keep silent, you will remain safe. Do not talk for a long time without remembering Allah. Talking much without remembering Allah is a sign of the hardness of the heart. Always speak the truth. Do not tell lies. Speak clearly. Speak in such a way that all those who listen to you understand you. Please and thank you. Please and thank you should become a vital part of your life. Always say please or thank you, Jazakallah, for any favor or courtesy. Some people reserve please and thank you for those outside the family. This is not good. You should always try to be polite to one another. Remember that the person who does not thank people does not thank Allah. Above all, always thank Allah for His gifts. اب ایک مرتبہ اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. ایوری ڈے کارٹسیز الآداب الیومیہ، روز مرہ کے آداب. یوننگ، جمائی لینا. اف یو یون، اگر آپ جمائی لے. ڈو ناٹ ڈو یون لاؤڈلی بٹ کوائٹلی، تو آپ زور سے جمائی نہ لے بلکہ آہستگی سے لے. ڈو ناٹ اسپیک وائل یوننگ، جمائی لیتے وقت بات نہ کرے. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to put our hand over our mouth while yawning. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھنے کے لیے جمائی کے وقت یا جمائی لیتے وقت. Yawning is from Satan. جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے. Try to cover your mouth. کوشش کرے اپنے منہ کو ڈھانپنے کی یا کور کرنے کی. And stifle your own. اور اپنی جمائی کو اندر لینے کی، واپس لینے کی. As much as you can. جتنا ممکن ہو سکے. Sneezing, چھینک.
Sneezing is a blessing from Allah. छींक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तोहफा है या नियामत है. You should not try to stifle a sneeze. आपको छींक को अंदर लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. This is no need to prevent it. इससे बचने की कोई जरूरत नहीं है या इसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है. When about to sneeze, जब आपको छींक आए या छींक आने वाले हो, you should turn your face away. आपको चाहिए कि अपने चेहरे को एक तरफ कर ले और cover your mouth और अपने मुंह को ढांप ले and nose और नाक को with your hand अपने हाथ से और hand kerchief या फिर रुमाल से जिसको दस्ती भी बोलते हैं दस्ती से. This will soften the noise and will not irritate people around you. ये आवाज को कम करेगा या शोर को कम करेगा, आहिस्ता करेगा और उन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द है तकलीफ नहीं देगा. यानी ऐसा करना, मुंह पर हाथ रखना या फिर रुमाल रखना, इससे आवाज कम हो जाएगी और जो आपके इर्द गिर्द है उसको तकलीफ नहीं होगी इससे. इफ यू मस्ट ब्लो योर नोज, अगर आपको अपना नाक साफ करना ही पड़े, डू सो क्विकली, तो इसे जल्दी करें. टर्निंग योर हेड टू वन साइड, अपने सर को एक तरफ मोड़ ले. स्नीजिंग अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह, छींक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नियामत है. Therefore, इसीलिए you should say, आपको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह on sneezing, छींक पर. When a Muslim sneezes and praises Allah, जब एक मुसलमान छींके और अल्लाह का हम्द बयान करे, those around him, वो लोग जो उनके इर्द गिर्द है, should reply by saying yarhamukallah, तो उन्हें यरहमुकल्लाह कहकर जवाब देना चाहिए. Saying सलाम, सलाम कहना. Greeting Muslims by saying assalamu alaikum is an act of kindness and courtesy. मुसलमानों को सलाम करना अस्सलामु अलैकुम कहकर ये एक नेकी और अदब का काम है. A Muslim should greet both the Muslims he knows and those whom he does not know. एक मुसलमान को चाहिए कि वो दोनों तरह के मुसलमानों को सलाम करे, जिसे वो जानता हो और जिसे वो ना जानता हो. When you go out of your home or return, जब आप अपने घर से बाहर जाए या घर वापस हो, you must greet the members of your family, तो आपको जरूर अपने अहले खाना को सलाम करना चाहिए by saying अस्सलामु अलैकुम कहकर. Remember that, इस बात को याद रखो, the nearest people to Allah, अल्लाह के नजदीक सबसे करीब वो है, are those, वो है who say अस्सलाम first, जो सलाम पहले करे. The nearest people to Allah are those who say अस्सलाम first, अल्लाह के नजदीक सबसे करीब वो लोग हैं जो सलाम पहले करे या सलाम में पहल करे. Talking, saying अस्सलामु अलैकुम should come before talking. अस्सलामु अलैकुम ये बात करने से पहले होना चाहिए या सलाम करना बात करने से पहले होना चाहिए. You should always try to speak good, आपको हमेशा अच्छी बात कहना चाहिए. Either या either दोनों तरफ पढ़ सकते हैं. Either speak good or keep silent, या आप अच्छी बात करें या तो फिर खामोश रहे. If you keep silent, you will remain safe. अगर आप खामोश रहते हैं तो आप महफूज रहेंगे. Do not talk for a long time without remembering Allah. लंबी देर तक बात ना करो अल्लाह को याद किए बगैर, या फिर इस तरह तर्जमा भी कर सकते हैं, अल्लाह को याद किए बगैर ज्यादा देर तक बात ना करें. Talking much without remembering Allah is a sign of the hardness of the heart. अल्लाह को याद किए बगैर ज्यादा देर तक बात करना ये दिल के सख्त होने की अलामत है. Always speak the truth, हमेशा सच बोले. Do not tell lies, झूठ ना बोले. Speak clearly, साफ बोले. Speak in such a way that all those who listen to you understand you. इस तरह से बोले कि वो तमाम लोग जो आपको सुन रहे हो आपके समझते भी हो या आपकी बात उनको समझ आए. Please and thank you.
please and thank you should become a vital part of your life. प्लीज और थैंक यू आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए. ऑलवेज से प्लीज और थैंक यू, जज़ाकल्लाह, हमेशा प्लीज और थैंक यू, जज़ाकल्लाह कहो फॉर एनी फेवर और कर्टसी, किसी भी ताउन या मदद के लिए या अदब के लिए. Some people reserve please and thank you for those outside the family. कुछ लोग प्लीज और थैंक यू सिर्फ उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं या उन लोगों के लिए महफूज करते हैं, रिजर्व करते हैं जो फैमिली से बाहर है. यानी सिर्फ प्लीज और थैंक यू उन लोगों को कहते हैं जो फैमिली के अफराद नहीं है, जो फैमिली से बाहर है. दिस इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट टू वन अनदर. आपको हमेशा नरम या शाइस्ता रहना चाहिए एक दूसरे के तय. रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखो, द पर्सन हु डज नॉट थैंक पीपल, वो शख्स या वो लोग जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करते, डज नॉट थैंक अल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते. अबव ऑल, इन तमाम चीजों से बढ़कर, ऑलवेज थैंक अल्लाह फॉर हिज गिफ्ट्स, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो उनकी नियामतों के लिए. अब एक मर्तबा इसकी रीडिंग और देख लेते हैं. Yawning. If you yawn, do not do yawn loudly but quietly. Do not speak while yawning. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam told us to put our hand over our mouth while yawning. Yawning is from Satan. Try to cover your mouth and stifle your yawn as much as you can. Sneezing. Sneezing is a blessing from Allah. You should not try to stifle a sneeze. There is no need to prevent it. When about to sneeze, you should turn your face away or cover your mouth and nose with your hand or handkerchief. This will soften the noise and will not irritate people around you. If you must blow your nose, do so quickly, turning your head to one side. Sneezing, a blessing from Allah. Therefore, you should say Alhamdulillah on sneezing. When a Muslim sneezes and praise Allah, those around him should reply by saying Yarhamukallah, saying Salam. Greeting Muslims by saying Assalamu alaikum is an act of kindness and courtesy. A Muslim should greet both the Muslims he knows and those whom he does not know. When you go out of your home or return, you must greet the members of your family by saying Assalamu alaikum. Remember that the nearest people to Allah are those who say Assalam first. Talking. Saying Assalamu alaikum should come before talking. You should always try to speak good. Either speak good or keep silent. If you keep silent, you will remain safe. Do not talk for a long time without remembering Allah. Talking much without remembering Allah is a sign of the hardness of the heart. Always speak the truth. Do not tell lies. Speak clearly. Speak in such a way that all those who listen to you understand you. Please and thank you. Please and thank you should become a vital part of your life. Always say please or thank you, Jazakallah, for any favor or courtesy. Some people reserve please and thank you for those outside the family. This is not good. You should always try to be polite to one another. Remember that the person who does not thank people does not thank Allah. Above all, always thank Allah for His gifts.
ہمارے ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستو احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔